Hello, my name is Kikon. I'm Nancy Hornbilltv. It's an Agamese News Roundup tonight. Prime Minister Narendra Modi bra aji Saturday din Madhya Pradesh Indore Gobarthan plan du inaugurate kori dishe video conference pra. Iniga hoigina idu Pradesh laga city kan sapa rakhibole aro pollution free city hobole motot korbo koise. हमने अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोबरधन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, फिर गोबरधन से स्वच्छ ईंधन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन, ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। Prime Minister Narendra Modi braji Saturday din de Afghan Sikh Hindu delegation kan logo taila korde log paise. Chakali Friday din de bhi PM bra Sikh spiritual leaders laga delegation kan logo log paise. Chua sal mid August moina nishna de Afghanistan do Taliban bra kabza kuri dia bishide bishi duk pai thakya minority community laga leaders kan logo PM bra log paise. अफगानिस्तान में ये सम्मान का कितना महत्व होता है और वहां का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है। आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप ये घर आपका है। ये हिंदुस्तान आपका ही घर है और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था और जब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की चर्चा की और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अफगान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांग के बिहारी लाल की पंजाब दे कली सब सीट करने वोटिंग থাকিবলৈ আছে আৰু उत्तर प्रदेश लगा थर्ड फेज टू 59 सीट्स करने होबले আছে। पार्टीज का लगा सीनियर लीडर खान सब फ्राइडे दिन दे ताइकन लगा लास्ट कैंपेन दु থাকিছে। यूपी लगा थर्ड फेज दे 16 डिस्ट्रिक्ट ब्रा वोटर्स खान 59 असेंबली सीट्स करने होबो बोलिंग दु থাকিব। इदु पोल फेज दे 627 कैंडिडेट्स আছে कुटे 2.15 करोड़ मानु वोट करने एलिजिबल আছে। और पंजाब लगा 117 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट तो कले लोले আছে। कुटे कैंडिडेट्स कंदो चरणजीत सिंह चानी कांग्रेस, भगवंत मान आम आदमी पार्टी और सुखबीर सिंह बदल शिरोमणि अकाली दल खान क्रुशियल समयदे पोलदो जिदिबले আছে। वोटिंग दो 7 AM ब्रा शुरू हुआ तो राति 6 PM तक होबो। कुंदो लगा वोट्स कंदो मार्च 10 दिन दे पुरुबो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रा 100 किसान ड्रोन्स के फ्लैग ऑफ कोरिया लगा वर्चुअल इवेंट दे कथा करा समय कुशे ताइदो कॉन्फिडेंट আছে कि इदु निशना प्रोग्राम दो ड्रोन सेक्टर दे डेवलपमेंट करने शुरुआत আছে और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज থাকিবলৈ লাগা भी कुशे। PM मोदी ब्रा भी कुशे करुदा एरोस्पेस तो 1 लाख निशना मेड इन इंडिया ड्रोन्स आहा 2 साल दे मैन्युफैक्चर কৰিবলৈ লাগা टार्गेट কৰিনা আছে।
मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। Power Department laga advisor aro MLA Dovi Hodo IME bra Hornbilltv logo chanai dishe ki consumer laga welfare garni operation aro maintenance activities logo revenue improvement de rate aro disconnection drive to Power Department laga implement kuri thaki bole ase. IB itu laga detail report sawo mohanla reporter Esther Lode. We have here the power advisor and MLA Shri Tovioto IME. Sir, just would like to ask you a few questions. Sir, as we inch towards summer in Nagaland and we know that the erratic power supply occurs every time, so is the department having any POA on this year's summer as we inch towards it? It's not about summer or winter, but the department is always there to see that the adequate power supply is, given to every consumer, every house. So, of course, for this reason or the other, there are at times certain load sheddings and all these technical error thing. But the department is always there to see that the consumers gets the adequate power supply. And regarding the revenue drive that is happening right now, can you please give us a little light and highlight on what exactly the status is as of now and what is the next step? No, you see, revenue drive is also not a new thing to the department or the government. But this time around, the government decided that the department should go a little aggressive on the revenue drive. Because whatever the consumers are consuming the energy, the consumers are not actually coming forward. So we have constituted the committee headed by a joint secretary and additional secretary along with the power officials to see that the people pay revenue on time, or even the pending bills to be paid to the government. So these are massive amounts. Some households have really huge amounts and they might not be able to pay. So what is going to happen to that? There will be a formula, of course. There will be a formula. But whatever we have consumed, we have to pay. That should be kept in mind for all, Not only the households, but even the government institutions, government officers. We are actually focusing more on government institutions, that your pending bill has to be paid on time. And of course, even the households, the team has already started. Not only in Dimapur, but in Kohima and then elsewhere. We will reach out to the other district also. But we are focusing more on Dimapur and Kohima as of now, as of today, yes. So lastly, we do have these transformers that blow up every now and again because of their, I think they're quite old and need to be replaced or something. Is there any plan of the government to replace these really, old transformers in colonies, or the one that consume huge amount of energy and power? See, these are very technical things. It's not about old or new. These are very technical things. People will know, people may not know. But for these last so many years, department is actually putting all efforts to see that all these transformers are maintained, to see that the power infrastructure development is happens in all places, even to the exterior part of Nagaland. So this exercise is on. We have certain schemes. We have state budgetary to see for the replacement, to see for the installation of the new transformers.
these are the process. This is an ongoing process. It will happen with time. That was the advisor for power, Tovioto IME, who just spoke to Hornbill TV and said that the department is being very aggressive in their drive, their revenue drive, where many people, consumers, are not paying their bills and they're all due. So he said that the department is going fully aggressive, not just with the private or homes or residents, but with also government departments. Reporter Esther with camera person Sayer for Hornbill TV. NICSE is the only institute in Nagaland with super infrastructure and is the largest institute not just in Nagaland but in entire Northeast. General Studies is a major part of the syllabus and needs thorough coverage of history, Indian polity, Indian economy and geography. All GS faculty at NICSE are from Delhi because you deserve nothing but the best. It has top faculties of Nagaland to teach Nagaland aspects. No one else can teach us better about our people and our land. Tests are important. At NICSE, highest number of prelims and mains test series are conducted. We have unmatched track record of best results since 2013. NICSE is soon to be 10 years old in Nagaland. 10 years of success, 10 years of trust, 10 years of service to Naga youth, 10 years of number one. Nagaland construction materials or food items te bishi dam uthi thagya do consumers kan garni major issue hoina ase. Idu February moina ekla brabi 50 kg cement posta do dui bar dam uthi na ase. Aro idu nishna ala construction materials kan bi dam uthia dikhi pai ase. Hornbill TV bra aji hardware dealers aro alag alag gotowns te jaise saman dam bishi botli hui thagya laga waja jani bole. Aibi ita detail report sawa. Nagaland construction materials or goods khan toile bisi juldi price toile up down hoy enega koina customers khan aru public khan toile media te takan di thake to aji Hornbill TV toile ground report lobo karne Dimapur aru Chumu under te ami khan traders khan dukan dangor khan te ami khan jai kena itu olop ground report lobo karne ai kena ase aru specially cement aru MS roads khan toile price bisi juldi up down hoy cement na dam khan to kile iman juldi uthi jai ase আৰু কাস্টমাৰস খান তো কি কয় আছে তো ওপৰতে কাস্টমাৰ খান তো বুঝাবলে বেছি দিগদাৰ না আজিকালি কোম্পানী পৰা বি উঠি আছে এটো আমি খান বি উপায় না এটো ৰেট প্ৰাইস দিয়ে ইতিয়া তো 510 আছে হলে বি 500 পৰা দি আছে আমি খান বি ইটো মহিনা দে কিমান বাৰ উঠিছে ইটো সাল জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী দে দুইবাৰ উঠিছে যা সাল তো 480 থাকিছে আৰু 22 रुपीस উঠি যায়ছে কাস্টমাৰ খান বিয়া নাপায় বিয়া তো পায় হলে বি উপায় নাই না বুঝাব লাগে কোনবা কাস্টমাৰ তো বুঝি যায় কোনবা তো না বুঝে রোড বি উঠিছে দাম তো কিমান বার উঠিছে ইটো সাল দে ইটো দুইবার উঠি যায়ছে हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ते पेंट्स लगा दाम भी बेसी उठी जाइए और सीजीआई शीट खान इतु खान भी सब उठी के ना आसे दाम तो इतु कारण मार्केट भी बेसी बिया हुई के ना आसे मानुला हाथ पे पैसा ही ना है मोई खान के इतने का कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उठी जाइए इतु कारण उठी आसे कस्टमर्स खान तो अपनी गन की कोई इनका प्राइस उठी था टाइम गाली শুনিব লাগে তাই কারণ তো ভাবনা করে থাকি মইখানি উঠাই দিয়ে আছে মইখান বি পাবলিক কে और मार्केट চাই কেনে উঠায় আসামলা রেট খটখটি ওসরতে রেট তুলে বেশি আলাক আৰু ডিমাপুরতে আলাক এনেকা কথা কান বি উলাই কিনা আছে ইয়েস আমি খানেতে জানিব ইটো রেট কিলে ইমান আপ ডাউন হৈ থাকে ডিমাপুর লাগা তো রেট দিয়া 491 আছে স্টার সিমেন্ট আসাম লাগা তো অলপ ইতো para কমতি ওভার ডিলার লাগা স্টার সিমেন্ট पहले तो 480 থাকিছে 480 তে 20 रुपीस एक एक्स्ट्रा उठिছে फिर इतिया 10 रुपीस और उठिছে इतिया 510 আছে কোনবা কাস্টমার 500 দেবি দিয়ে চার্জ লাগা হলে 490 495 পারা বি দে লোডিং ইনক্লুড আছে তো আসাম লাগা তো লোকাল মাল আছে তো তাতে মানে গুয়াহাটি লাগা গুয়াহাটি ফ্যাক্টরি নজদিক ভাড়া আছে তো अब ডিমাপুরতে তো কলকাতা লাগা মাল হর দোকানে কলকাতা লাগাই পাবো মানে লোকাল মাল তো নাই সব দোকানতে কোনবা তো লোকাল भी আছে खटखटी सत्यम लगा আছে फैक्ट्री আছে না लेकिन सब मान तो ना लगे तो कलकत्ता लगा माल हल्का हो तो गुवाहाटी लगा तो भारी हो तो 68 भी मार्केट ते आसे गाड़ी हार भी तो आसाम ते तो कमती हो डिमापुर ते भास्ती आसे तो पहले थके से ओवरलोड थके से आजिकल सब तो अंडरलोडिंग आया से इतो ही आसे और कोई नहीं
ओवरलोड अंडरलोड मतलब की जैसे पहले तो एक 10 चक्काते थे 700 बैग आए থাকে तो इतिया 460 आया से 12 चक्काते पहले 10 चक्काते 700 भी आए থাকে गाड़ी भालो ले इतिया 340 आया से रोड निमते कि रोड खान भी बेसी होते इतने अंडरलोडिंग आया से मार्केट में कौन जगह जाले स्टार पहले लागे स्टार ना থাকিলে अमृत मांगिबो सूर्या गोल्ड मांगिबो टॉप से मांगिबो कि तू तो सस्ता से तू लगा मार्केट तो वैल्यू नहीं ताई लगा सीमेंट तो भाला से बिया नहीं लेकिन स्टार लगा कौन मानो कल मिस्त्री स्टार ही लागे बोकाजन सीमेंट तो किने का बोकाजन में सीमेंट भाला से बोकाजन एक बार तो कंप्लेन हो 10-20 साल पहले कहीं गिरी से ना मणिपुर लगा स्टेडियम ना इतने तो बोकाजन तो सीमेंट भाला से लेकिन नज़दीक लगा तो मानो खान भोजे भाल समान ना बुझे तो अभी तू सीमेंट लगा स्टार ही भाला से 500 से अमृत भी से 480 490 लेकिन मानो खान का तू सस्ता से तो भाल नहीं तू जिमान टाटा लगा लो टी से टाटा लगा सब मानो चलाए तो गुवाहाटी लगा चलाए कलकत्ता लगा चलाए मानो जो तू वस्तु सोच हाई दाम से तू ही भाल होबो इतु नहीं मानो मिस्त्री खान को ले स्टार से स्टार ही चलाबो लेकिन सीमेंट सब भाला से लोहा भी भाल सोच लेकिन मानू करते ऐसे तो कस्टमर लोग बोलता है दाम बहुत अप डाउन होता है एक महीना में ये महीना 9 रुपया से अगला महीना 10 रुपया एग्जाम्पल होने से वो सामान तो हम लोग का नहीं होता है हम लोग भी खरीदता है ना तो हम लोग के पास भी ऊपर नीचे होता है तो हम लोग को भी ऊपर नीचे करना पड़ता है अच्छा ये क्यों ऐसा होता रहता है ये मार्केट अब लेबर का रेट बढ़ गया कोयला का रेट बढ़ गया पेट्रोल का रेट बढ़ गया डीजल का रेट बढ़ गया इसलिए वो लोग भी अप डाउन करके बढ़ाते रहता है ना टैक्स बढ़ जाता है रोड टैक्स बढ़ जाता है पुलिस का भी टैक्स बढ़ जाता है हाँ वहाँ से टिप में अभी 5,000 पहले कम था बालू के ऊपर अभी 5,000 फिर लग रहा है तो इसलिए पहले बालू मिलता था 45 से तो हम लोग 42 41 में बेचता था अभी 52 51 में मिलता है तो हम लोग 48 47 में बेचता है जो हम लोग को होलसेल बेचने के लिए मिलता है 30-40 उसको भी रेट हम लोग कम करके बिक्री करता है वही हम लोग का। अच्छा टैक्स कौन कौन उठाता है टैक्स तो हम लोग नहीं देता है यहाँ में चुम्मू में तो टैक्स नहीं है चुम्मू में स्टेट अलग अलग कमोडिटीज और मटेरियल्स ते दाम उठिया दे पब्लिक खान लगा भावना जानी बोले अमेरिकन लगा रिपोर्टर अदुनाब्रा कमर्शियल हाबते कुंबा सिटीजन्स लो दे कथा करिसे आइबी इटा डिटेल रिपोर्ट सब तो मोगा लगा दूसरा स्टेट से कंपेयर करिसे बोले सामान कमोडिटीज एसेंशियल कमोडिटीज धोले भी दूसरा की कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कान भी दाम उठिया से तो अपने ला हिसाब ते इदु की निमित्ते आसना ना मिला भावना हिसाब ते इदु टैक्सेशन illegal taxation bisi ase itu huni thake amian bi dikhi thake enega howa right obviously itu barba saman khan ahi ase to gate khan de itu check post khan check gate khan bisi ase goe to itu bisi ola de illegal enega la bisi thake goe itu obviously dan kiman tax terabo itu nisina amian la jaga da saman do itu ba dam bisi uthi jabra amian public khan bi done duk pai ase amila mula opinion de mula bhavana de itu ase aro like aro government la side parabe पुलिस खान होले भी लो हान बड़ा होले भी अलग स्ट्रिक्टली साइले बालू होनिंगे ने साइन जाओ तो लो लगा हन भी तान साइड पर भी इधर इलीगल टैक्सेशन भी थकी जाएगा ना होनी थके अमियान तो इन्हें का तान रहा इन्हें कुले तो दिक्कत ऐसा तो इधर तान फर्स्ट तो तान ने ठीक पड़ा तान ड्यूटी दिखी ऐसे इन्हें कुले तो ऑब्वियसली कमती तो हुई जाओ नहीं है और मन भी आराम बाबू नहीं है अमिला बाबू ना इधर ऐसा नागालैंड ते दाम बेसी उठा लगा तो ले टैक्स लगा टैक्स इलीगल टैक्स बेसी আছে और तो टिकट टैक्स बेसी আছে और तो तेल लगा दाम भी बेसी उठी जा पड़ा इनका हुआ पड़ा दाम तो बेसी उठी जाए से दूसरा स्टेट ते दूसरा जगह ते आमार खान बाजार करबले जाइले रेट तो एकदम नॉर्मल আছে वाले भी आमार खान स्टेट ते खुशी खुशी रेट আছে একটা जगह अलग আছে अलग हिसाब पर अलग अलग दाम बेसी बढ़ाई থাকে ये तो करने ये तो सब कंट्रोल कर ले एकदम बहाल सब करने बहाल हो बोले इमती बोले भी टैक्स तो बेसी लई दिया पड़ा था एखन भी तो रिकवर कर बोले इमती ये तो लगा रेट तो बेसी भरी जाए ये तो करने ये तो मेन तो एडमिनिस्ट्रेशन और ये तो तबाशी और ये तो पुलिस और इन्हीं नेशन वर्क करा खान लगा ये तो खान कमरा खान लगा मिस्टिक परा खाली टैक्स खाए लोग के ना आमा खान लगा फापना न करा परा इनका हो जाए ये तो कारण ये तो कंट्रोल আজি লোদাवी विलेज ते स्कूल एजुकेशन लगा एडवाइजर केटी सुगालुब्रा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दो अपग्रेड करिना गवर्नमेंट हाई स्कूल दे त्या लगा इनॉग्रेट करिसे
Program de kotha gura homoy special guest pra gushe Nagaland drop out laga rate tu bishi uthi ase aro teachers aro posti manukan compromise na kurigina mon pura digina bacha khan ge hikabo lage kushe IB details reporter ke Christino Giholo de janu. We have 1,953 government schools, that is including higher secondary schools, high school, elementary schools and primary schools. And I have a total strength of 19,079 teachers. And I keep on reiterating this. My teachers are qualified. My teachers are trained. When I have quality teachers with you, and if you do not utilize them, the benefit of education for your children, becomes worthless. So I would like to urge upon each and every one here, including my teachers, to remember your responsibility for the students. Many schools, many students, they prefer to study outside Tansribar subdivision, that is in Dimapur, though they face lots of difficulties economically, and even for the parents it's a burden to send their students outside their villages. But the condition of this subdivision was such that feeling pity also, feeling concern for them also, but we as head also, we could not do much. But I'm happy that today another new government high school is being upgraded, and I'm sure this will bring a big relief to all the students and as well as to the India's independence Azadi ka Amrit Mahotsav laga 75 साल नाम दे जवाहर नवोदय विद्यालय कोहिमा दे photo exhibition thaise aji Friday din de etu program laga special guest principal director for school education Shanavas C thagise aro tai bra kotha kure homoy student kan gini chor laga passion du full dedication bra follow grule encourage korise. Twinkling by Manipur. Of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. The official journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav commenced on 12th March 2021, which started a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence, which we will be celebrating this year, and will end on 15 August 2023. Special guest Shanavas Pra photo exhibition holder inaugurate gradishe aro painting aro quiz competition laga winner khange felicitate gradishe. Party Chanda Party laga national president JB Nadara olop din age Manipur state de pre-poll violence hobo chance nai ko abishide Samchai Singh kun National People's Party bra Manipur candidate L Sanjoy laga paba ase taige kuli marigina chogom gridishe edu laga incident do jagali rati kida Sanjoy tai laga pacha animide campaigning gridishe edu laga homoide hoise aro suspect to militant khange thaki ase NBP candidate L Sanjoy do BJP de thagigina joamoina NBP join gurise victim do guli tai laga right shoulder de lagise aro idia hospital de ase. Manipur Assembly election garne first phase to 28th February day thaki bole ase. The incidents that happened last night in Andhra constituency, the house of the candidate, is very unfortunate, and this is just simply reflecting frustration of certain individuals, and they know the overall political situation. So this is not acceptable at all, the kind of actions these people are taking. And we in politics and democracy have always believed in casting expressions through our speeches and our votes, but this kind of behavior and this kind of an action is completely unacceptable. Hornbill TV